If I'm ashamed that I'm on a wheelchair, which I was, make you question your existence कि भाई मैं हूँ ही क्यों, मैं मरी क्यों नहीं जाता. Nobody else is going to understand you. And then the new life started flowing within me. I go, yes. I let it one-way communication. They are judging me. I'm not judging them. You call me whatever you want to. But I love myself. And we decided to surround ourselves with people who were supportive. Arranged marriages in India, particularly in Baniya community, were more of business deals. My reality is I'm fighting with this demon. My truth is I'm strong. We had a chapter on MS. So मैं तो सोचो मैं तुम्हारी किताबों का राजकुमार हूँ. You had a chapter. ये पहली बार आपके थ्रू ही उन्हें पता चलेगी. Don't tell me. Oh my God. Super excited for this, and first of all, thank you so much. If you can quickly introduce yourselves to our viewers so that they know that who you are and who they are listening to. Hi, I am Abhishek Trivedi and I'm with my wife Richa Gupta. We have founded organization Hope and Humanity and we are working for person with disability. I myself sat down on wheelchair in December 2019. So I have seen life from the full height of 6 feet and now at 2.5 feet. So I can see world from both the heights and I know what are the things which should be done for upliftment of disabled people. And yes, our heart beats for them and we are working for them. We want to do as much as possible in our this life. On the same lines, we have done a drive, Pan-India drive. We traveled from Chandigarh till Kerala. It was somewhere around, it was 3635 kilometers. And yeah, it was amazing experience. It was lovely, life-transforming experience. But yeah, second month of my admission in engineering college, I was diagnosed with this unfortunate disease, multiple sclerosis. It's such a tricky disease. It took 1 year for diagnosis कि ये बीमारी है क्या. Okay. आपके सिम्टम्स इतने वेरिड होते हैं, डॉक्टर्स को पता नहीं चलता क्या होता है. 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है कि इस डॉक्टर से उस डॉक्टर में आप धक्के खाते रहते हैं. और आपकी एज क्या थी उस टाइम? टीनेजर, सो 18-19 थे. उससे पहले कोई सिम्टम नहीं था आपको? उससे पहले कोई सिम्टम नहीं था. You were absolutely healthy and hearty, playing cricket all the time. Right. हम स्कूल में खेलते थे तो हमारे जो कोच साहब थे वो हमें रोज़ 13 किलोमीटर्स दौड़ाते थे बिफोर प्लेइंग क्रिकेट. ऐसा था, मेरा घर मेरे स्कूल से 13 किलोमीटर दूर था. हमारी बस 40 मिनट में पहुंचती थी और हम भी 40 मिनट में पहुंच जाते थे रनिंग. तो वो इतना एथलेटिक थे फॉर स्पोर्ट्स. बट वही हुआ, जो होना है वो होना था. कॉलेज में एडमिशन लिया तो वो बताया सेकंड मंथ में ही डायग्नोसिस, वो बीमारी स्टार्ट हो गई, सिम्टम्स आने शुरू हो गए. और सिम्टम हाँ, क्या था? क्रिकेट ही खेल रहा था. फील्डिंग पे लगा हुआ था. बैट्समैन ने मेरी तरफ शॉट मारा, मुझे फील्ड करना था पर मैं ब्लैकआउट हो गया. ओके. वो फर्स्ट दिखा ही नहीं. और जब रोशनी वापस आई तब बॉल मेरे बगल से निकल गई. तो वो एक स्प्लिट सेकंड के लिए टोटल ब्लैकआउट था. ओके. वही थोड़ी ही देर में वो ठीक हो गया. बट दैट वाज प्रीटी स्कैरी कि ये क्या हुआ. एंड दैट हैपेंड वन मोर टाइम. एक बार को तो बंदा फिर भी इग्नोर करके चलता है कि छोड़ देते हैं, क्या हो गया, ठीक हो गया. बट सेकेंड टाइम जब हुआ तो इट वॉज इवन मोर स्कैरी. तो इसको फॉलो किया, आई डॉक्टर से मिले. सेकंड टाइम कब हुआ? अगले ही दिन हो गया क्रिकेट खेलते हुए. ओके. तो आई डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा आगे ठीक है ये सब वो सब आगे परस्यू. बट और भी सिम्टम्स आने शुरू हो गए. वॉक में डिफिकल्टी, रनिंग करते थे तो टकराने लगे, गिरने लगे, फंबलिंग होने लगी. ये कितनी देर बाद? 1 महीने बाद. 1 महीने में. और उसके बीच में आई डॉक्टर्स. और ये सिम्टम्स ग्रो हो रहे थे? नहीं, ये वहीं रुक गए थे. ये एपिसोड ऐसा था कि बाद में पता चला एग्रेशन के वक्त ही, जब थोड़ा एक्सर्ट कर रहे हैं तभी ये सिम्टम होता था, आई ब्लैकआउट वाला. बट हाँ, फिर 1.5 महीने बाद फिर वो फंबलिंग स्टार्ट हो गई, चलने में दिक्कत, वॉक पे, रनिंग में दिक्कत आने लगी. वॉक वॉज प्रीटी मच ओके. देन धीरे धीरे वॉक में दिक्कत आने लगी. लोग कहने लगे कि भाई तू तो ऐसा चल रहा है जैसे पी के चल रहा है. और ये कितने टाइम में, फ्रॉम फर्स्ट इंसिडेंट टू 2-3 महीने में ये होना शुरू हो गया? होता ही रहा. Right. From absolutely running 13 kilometers a day to people saying that, right? Right? Yes. Right. हाँ, फिर डायग्नोसिस हुआ, बताया मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. पता ही नहीं था क्या होता है. Right. डॉक्टर ने भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया. और जब ऐसा सिम्टम हुआ, आपने घर पे क्या बताया?
फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट खेलते हुए ब्लैकआउट हो गया, सो उस टाइम पे घर पे जाके आपने क्या बताया कि क्या हुआ? नहीं, या घर कुछ बात ही नहीं पे हुआ? नहीं बताए, मैं बताया। बस अकेले ही चला गया था डॉक्टर के पास। सो घर पे क्यों नहीं बताया आपने? मुझे खुद ही समझ में नहीं आया मैं क्या समझूं, मैं क्या बताऊं। ओके प्लस थोड़ा ऐसा पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता था। ओके और उसके बाद जब 2-3 महीने में सिम्टम्स ऐसे होना शुरू हो गया था कि लोगों ने बोलना शुरू किया हाँ, कि हाँ। एज अ ड्रंकन आप वॉक कर रहे हो, तब तक पेरेंट्स को आपने नहीं बताया? नहीं, फिर वो घर वालों ने भी देख लिया कि तुम्हें चाल में कुछ फ़र्क है। ओके तो फिर कहा हाँ फ़र्क तो है, मुझे भी लग रहा है। एंड देन वी वेंट ऑन टू फाइंड कि हुआ क्या है। तो उस चक्कर में हम डॉक्टर्स के पास गए, बहुत डॉक्टर्स के पास गए। सो एक ने तो टीवी बोल दिया था कि आपको टीवी हो गया है। बिना डायग्नोस और उसके लाइक को पता नहीं कैसे। कोई आइडिया नहीं। हाँ, सो आपका बॉन्ड बचपन से फैमिली के साथ ऐसा होता है जैसे हमारी टिपिकल फैमिलीज में होता है, वेयर डैड इज लाइक अ डॉन, वेयर यू कांट शेयर एंड टॉक एनीथिंग टू हिम, एंड देयर इज अ चैनल कॉल्ड मदर जिनको बाईपास करके अच्छी अच्छी खबरें ही सिर्फ डैड तक जानी चाहिए और ऐसा कुछ होता है, लाइक देयर इज अ चैनल टू। बिल्कुल ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था। ओके एंड आई थिंक इट इज़ जस्टिफाइड एज वेल, बिकॉज फादर्स आपके बाहर जा रहे हैं, उनका टाइम ही घर पे इतना स्पेंड नहीं होता। तो इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1 hour 1.5 hour इन होम इन अवेक स्टेट, यू बेटर नॉट डील विद दीज थिंग्स। राइट, तो ठीक है, वो वैसे ही था। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। तो ये चल रहा था, अब डॉक्टर्स ने आपको बता दिया ये MS है। ये MS है, हाँ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और अब आपको पता चल गया। बट अभी यू आर स्ट्रगलिंग विद इट कि ये क्या चीज़ है। अभी आपको इसकी इंटेंसिटी नहीं पता है? अब भी नहीं पता। अभी नहीं पता। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, उसमें लिखा था कि ये फैटल है। ओके एक टाइम आएगा जब हो जाएगा आपका, नहीं बचेंगे आप। पर इतना जल्दी दिमाग रेडीली एक्सेप्ट नहीं करता कि आपको कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया। मैंने नहीं एक्सेप्ट किया, नहीं नहीं ऐसे थोड़ा हो सकता है। वो जो एक फेज ऑफ डिनायल था, डिनायल, या जैसे कहते हैं ना कि यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग द एलिफेंट इन द रूम, वो मेरा फेज बहुत लंबा चला। एंड वो मुझ पर बहुत भारी भी रहा। इट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, दैट आई शुड हैव एक्नॉलेज द एलिफेंट इन द रूम एट फर्स्ट। वो मैंने नहीं किया। लाइफ वैसे ही चलाते रहे। डॉक्टर ने कहा आप इंजीनियरिंग छोड़ दो, आप थोड़ा अपने पे ध्यान दो, बट जिद थी कि इंजीनियरिंग तो करेंगे, तो कर भी ली। राइट। और अभी तक आप घर वालों से ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं? ये पहली बार आपके थ्रू ही उन्हें पता चलेगी, अगर उन्होंने। डोंट टेल मी। हाँ। ओह माय गॉड। ओके। ये पहली बार ये Wow. सारी चीज़ें उनको पता चलेंगी। ऐसा क्यों? मतलब लाइक यू नो, पेरेंट्स शुड बी द फर्स्ट पीपल इन आवर लाइफ जिनको आप जाके ऐसा बोल सकते हो कि यार सी चोट लग गई, कट लग गया, या उसने मुझे मारा, स्कूल में मुझे बच्चे ने ऐसा कह दिया, टीचर ने बहुत डांटा। यू नो, पेरेंट्स शुड बी दैट, शुड बी दैट, राइट? वो गैप आया मेरी लाइफ में। मैं 12th के बाद सीधा कोटा चला गया था फॉर IIT प्रिपरेशन। तो मैं वहाँ जो 2 साल रहा, उसमें पेरेंट्स थे नहीं, उस वक्त मोबाइल भी नहीं था। तो उसने एक थोड़ा डिस्कनेक्ट क्रिएट किया। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन नहीं थी, हमारी फ़ोन पे बात होती थी, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार हो जाती थी। पर उस एक कन्वर्जेशन में आप क्या बता दोगे? तो वो जो एक डिस्कनेक्ट आना शुरू हुआ, जो रेगुलर पूरे दिन साथ रहने से अब 10 दिन में एक बार बात होती है, वो 15 मिनट, तो वो जो क्वांटिटी ऑफ शेयरिंग था वो कम होता रहा। वो कम होते होते इतना कम हो गया कि जब तक मैं घर वापस आया तब तक मैं वो बच्चा ही नहीं था। Were you oversensitive? Do you think? दिस इज़, जितने भी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट मिलेंगे, आई डोंट नो हाउ यू केम टू दिस कंक्लूजन, बट जितने भी MS के पेशेंट मिलेंगे, एवरीबडी इज़ Oversensitive. वेरी सेंसिटिव, वेरी सॉफ्ट हार्टेड। उनको बातें जल्दी चुभेंगी, ज़्यादा परटेन करेंगी, उनके दिमाग में परसिस्ट करेंगे। So वैसा है। आई डोंट नो हाउ यू केम अक्रॉस विद दिस। No, because this is what I can see. This is what you are saying. This is what you are speaking. You know, like you are. I could see in you that you want to hold that thing so that no one should suffer and no one should be this and no one should know, and I am okay to fight with it. And this is like you have one thing to deal with, but you are multiplying it 100x by thinking about, but my mother should also be. This is a quality if you can think. That means it comes from sensitivity.
there's a thing called oversensitivity as well, which turns against you. Where things which you should tell, truth which you should tell, if it hurts, it hurts. पर मैंने भी अभी अपनी लाइफ में ना एक ये चीज़ देखी कि चीज़ों का ना रिटर्न डैमेज भी बहुत है. लाइक इफ आई एम सेइंग समथिंग टू समबडी एंड हार्डली आई डोंट, in my personal experience, it's hardly somebody is there to understand and grasp it fully. Ki nahi, this is what this person needs and we should give him space of whatever he needs. And it has happened quite a few times at my home when I demanded something ki this is what I need. For example, autonomy. So I have been denied. So wo jo since childhood. After this disease I'm talking about. उसके पहले का तो मैंने कहा चलो let go. जब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी थी एंड आई वॉज नॉट ऑन द व्हील चेयर येट, तो एक बार कुछ ऐसा मैंने प्लान किया. आई एम वेरी मच डिपेंडेंट फिजिकली ऑन एवरीथिंग, ऑन द वॉल, ऑन द पिलर, ऑन द पीपल. मैंने डिसाइड किया कि आई लिव अलोन फॉर वन डे. लेट मी गेन दैट कॉन्फिडेंस दैट आई कैन. एंड इन दैट वन डे somehow my mother, my family got to know. They came like running this house and they started like कि हम तुम्हारी चोरी पकड़ने आए हैं. And that really hurt. कि rather than you should be understanding and then. Do you think that validates the idea that yes, no one can ever understand me? Yes. Yeah? Yes. That's why it'll trigger the behavior further that yes, from next onwards. Obviously. Of course. See, I was right. It doesn't make sense to share it with people. Yeah. Right? True. वहीं से ये वैलिडेट हुआ था. सही कहा आपने बिल्कुल, कि जब उन्होंने वो ही नहीं समझा तो फिर मैंने बताना ही छोड़ दिया. मैं कहा ठीक है, जब आपने समझना ही नहीं तो why should I make. जब मैं कुछ बोलूँगा I'll listen to it. If I'll say I'm weak, I'll listen to this that I'm weak. I don't want to hear that thing from me. You call me whatever you want to, but I love myself. I have to be with myself. Absolutely, man. It's a universal right. It's a universal right. Right. And it's an individual fight. I remember this story from like Mike Tyson. उसके जो कोच थे वो कहते थे कि life is like a boxing ring. सारा support सब कुछ है तुम्हारे पास, बस जब आप रिंग पे उतरते हो ना तो आप you are alone. उसके जब आप का राउंड खत्म होएगा then your support system will come back. Is that your birth? Yes. I mean, you're practically you are alone. Practically you make relations. Huh? These are practical arrangements to arrangements, right? Yes, These are practical arrangements. Yeah. And every arrangement has to serve certain things. Ring में आप उतरेंगे. Yeah. You're alone. Your strategies, your planning. You can choose your coach. You can choose your cheerleaders. Yeah. You can choose your supporters. Obviously. Inside ring, it's inside, you it's and you. your enemy. It's you. So coming back to the diagnosis, so doctor ने कहा stream change करो. Okay. Which because it was my very childhood dream. So you pursued. To pursue engineering in automobile. So mechanical मेरा plan था first step. I didn't give up on that. I said नहीं, okay, मैं कर लूँगा, देखते हैं. And with the grace of God, लड़कते फड़कते लिम्प करते हुए वो हो गया. दोस्तों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे. हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं अपने बेड से अपने वॉशरूम तक नहीं जा सकता था. So it was so worse. हमारे टोटल 17 एग्ज़ाम थे और मैंने टोटल 34 एग्ज़ाम दिए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैं हर एक एग्ज़ाम में फेल हुआ था. ये पता नहीं क्यों स्टोरी हमारी एक जैसी लग रही है. आपने तो एग्ज़ाम दिए, मैंने तो एग्ज़ाम भी नहीं दिया. मैं तो एब्सेंट मार जाता था. बट अच्छा, ओके. सो डबल. हाँ, एक बार फेल हो गए, फिर अगली बार में दिया तो पास हो गए. एवरी एग्ज़ाम. ओके. तो उसमें एक छोटे छोटे एग्जाम्स होते थे मॉड्यूल के, फिर एक मेन एग्जाम्स होता था कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम. तो मैं तो सारे फेल करता था. सारे मॉड्यूल एग्ज़ाम फेल किए, फिर मॉड्यूल एग्ज़ाम सारे पास किए, फिर कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम फेल किया, फिर कॉम्प्रिहेंसिव बाद में पास किया. आपको क्रिकेट का शौक था ना, तो फर्स्ट बॉल ट्राई बॉल होती है. So try ball. That was ऐसे ही था, बिल्कुल सही. Try ball. See, I was not ready. It was just a try ball. Okay. दोस्तों का बड़ा सपोर्ट रहा. कई बार तो इतनी दिक्कत होती थी. मेरी अटेंडेंस 13% थी और वो 13% भी आई रिमेंबर. मेरा एक दोस्त होता है विवेक दुबे. ही वॉज टॉल एंड ही वॉज स्ट्रॉन्ग. तो मैं उसके कंधे पे ना पूरा वेट डाल के चलता था. वो मेरी कमर पकड़ लेता था. मैं थोड़े ताकत लगाता था, 90% उसकी ताकत होती थी.
So that's how he used to drag me until the classes. Wow. वहाँ से वॉशरूम जाना होता था तो 2 दोस्त ड्रैग करके वॉशरूम लेके जाते थे. तो दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया. उनकी वजह से ही इंजीनियरिंग हुई मेरी, वरना हो नहीं पाती. बट जब तक लास्ट ईयर में आए तब तक तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई. तो फिर मैं कहा नहीं अब डॉक्टर की सुननी नहीं चाहिए, तो मैं सॉफ्टवेयर साइड में चला गया. मैं इन्फोसिस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर चला गया. इन्फोसिस को फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इंजीनियरिंग करी है, वो दोबारा सिखाएंगे आपको सब कुछ. राइट. मैं मैकेनिकल भी था तो भी मैंने उन्हें बताया मुझे MS है. दे वर सो रेडिली एक्सेप्टिंग कि ठीक है आप आ जाइए, कोई बात नहीं. एंड दे टुक मी इन, दे ट्रेन मी इन सॉफ्टवेयर. 4 years वहाँ पे मैंने जॉब करी. फिर सिम्टम्स और वर्स होने लगे, इतने ज़्यादा वर्स कि समझ में नहीं आया क्या करें. तो मैंने सॉफ्टवेयर जॉब छोड़ी. मुझे लगा कि खुद को टाइम देना चाहिए. तो मैंने SBI में एज अ क्लरिकल चला गया. क्लरिकल की जॉब 6.5 hours की थी. सॉफ्टवेयर जॉब का मिनिमम 9.15 hours का होता है. ओके. एवरेज जो आपको हर डेली का लेके आना पड़ता है. तो मुझे लगा यहाँ पे मेरे को 3 घंटे मिलेंगे, सो आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इन अ बेटर वे. राइट. दैट डिडंट वर्क. वो मैंने कर तो लिया, मैंने अपना करियर भी छोड़ा, पर आई कुडंट कंट्रोल. जो होना था वो होता ही रहा. एंड द मेन रीज़न behind this deterioration was with my psychology only. Okay. The first thing first, you have to acknowledge elephant in the room. मैं वो ही नहीं कर रहा था. I was just ignoring कि नहीं ये कुछ नहीं है, नहीं ये कुछ नहीं है. Until unless you don't acknowledge your enemy, you won't fight them. Absolutely. तो वो उनको मैं इग्नोर मोड पे रखता रहा और मेरी तबीयत ख़राब होती रही और मैं किसी और चीज़ को ब्लेम करता रहा कि यार मेरा करियर कहाँ जा रहा है, यार ये कैसे होगा, यार मेरी लाइफ ख़राब हो गई. तो वो और ज़्यादा हर्ट करने लगा. अब लाइफ कंपैरेटिव ही जीते हैं, मैं ही जी रहा था. ये तो बाद में समझ में आया कि कंपैरिजन इज़ दी मदर ऑफ ऑल इवल. एब्सोल्युटली. तो अब मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्तों का करियर कहाँ जा रहा है, वो स्काई रॉकेटिंग कर रहे हैं. मैं तो हेल्थ भी नीचे जा रही है और करियर भी नीचे जा रहा है और सब कुछ ही नीचे जा रहा है. राइट. क्रेविंग. You started drinking at that time, college में? I drank because of friend, not because of friends. Friends. Okay. To be with them. Friends, yeah. It's just a moment to enjoy with them. But never I ever got into. So was it कि शाम को रूम में बैठे हैं, drink कर रहे हैं? बस. So what would you share with your friends? Nothing. Cricket. And about your MS, were you? Nothing. वो आप पूछते थे आपसे इस बारे में कुछ? वो मेरे साथ हॉस्पिटल में रात में सोते थे जब मेरा एडमिट हुआ था. सो वन ऑफ माय फ्रेंड हु यूज्ड टू स्लीप विद मी, लाइक अल्टरनेट शिफ्ट चलाते थे वो. सो उनके साथ आप उस टाइम पे क्या बात करते थे? नथिंग. कुछ भी नहीं, इस बारे में कुछ नहीं. कुछ भी नहीं. ओके. सो इट वाज गेटिंग even worse, even more claustrophobic. Right. तो वो एक जो क्लोजेट है वो बंद होता गया. क्यूब में आप कंप्रेस फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकते, दोस्तों के साथ भी नहीं शेयर कर सकते. जिनके साथ ड्रिंक कर रहे हैं वो हॉस्पिटल भी जा रहे हैं, बट स्टिल I cannot share my heart. उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो आपको खुद ही मानना पड़ेगा ना कि ये है कुछ शेयर. So वो नहीं एग्री हो पाया अभी तक. वो बहुत बाद में आया कि वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी. तो राइट. So that was going on. उसमें आप रिचा से कब मिलते हैं? 2010 दिसंबर. इन्फोसिस 2009 मार्च में स्टार्ट करी थी. 2010 दिसंबर में मैं ट्रांसफ़र हो गया था चंडीगढ़ में. ओके. फ्रॉम मैसूर टू हियर. अब यहाँ पे मेरे को पैशन था सेल्स की तैयारी करने का. सो आई वांटेड टू एटलीस्ट वंस आई वांटेड टू गो फॉर इट. सो आई डिड. और तब मेरी हेल्थ भी ठीक थी तो मैंने कोचिंग ज्वाइन करी. वहाँ पे ये मिले मेरे. अच्छा, कोचिंग में मेरे आईएएस की, आप भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे. Being a topper, everybody was like, नहीं, go for civil services, you'll clear it. है ना, you are very intelligent, you can do it and this and that. Who inspired you for that? किसने वो seed plant किया था? Devil. Devil. must be a devil, right? My mom had a very big impact in my life. She had always had a very big impact. So she thought practically that if I go for a PhD, I'll spend 5 years and then I'll get late for marriage. Then civil services, you can just study for 2 years and get crack. And they were like so confident that you'll clear in first attempt. ना तो 2 साल में हो जाएगा. कर लेगी और करेगा. Right. Also, I want to talk about. आपने बोला कि मदर ने आपको बोला करियर चॉइस के लिए. उसमें वो एक फैक्टर बीच में लेके आ रही थी कि सेटल हो जाएगी और फिर शादी हो जाएगी. स्मॉल टाउन स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं
उनकी डेस्टिनी सिर्फ वो शादी देख के ही तय की जाती है. Since I was staying away, तो Okay. ऐसा नहीं था कि I mean it was very overwhelming, but yes, I could feel that in The background noise was one there. concern my mom had, that if I get a PhD, so obviously I won't settle for a +2, right? So it will be more difficult to find a match, an intelligent match from a small town city. Right. So So keep your daughter dumb. No, not exactly dumb, but sufficient. To Sufficiently. fit in, like to yeah. to trim the intelligence Exactly. and trim the dumb part and keep it Yeah. in the shelf so that it's I look don't- at it. कौन से लड़के हैं जो शादी कराना चाहते हैं? I think it's I not don't just blame you. them. It's their society. It's their Yes. upbringing. It's their Yes. thought process. Yes. Unfortunately, but that's the yeah, truth. That's it. I think they didn't ask right questions. जो हमारे पेरेंट्स जिस जनरेशन के आते हैं, जिस सोसाइटी में वो आते हैं, शायद कुछ सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशंस कुछ ऐसी अलग होंगी that they didn't ask right questions. It was considered rude to ask. Ask. A question. You know, everybody except me had a lot of faith that I would clear civil services. अच्छा. So I enrolled in a PhD to be safe, and then I started with my coaching in December 2010. That was our common batch where we joined, and that's where we met. इनकी मम्मी ने शादी के लिए भेजा था, प्लान पूरा हो गया. So you know, one thing was So it's not on me, it's on your mom. one thing was very. Right. I had kind of a feeling growing up, watching up, that I don't want to go for an arranged marriage setup. अच्छा वो नहीं था. That I mean, I can't say very clear because I was not, but I had something in my mind that I don't want to go, because somehow that I had seen watching, I kind of felt that arranged marriages in India, particularly in Baniya community, were more of business deals. Right. You know, if there's a fault in a boy or girl, you just increase the money. That's it. Right. Yeah. And that kind of acts as a compensation. Right. Also, hardly anybody talked about the mental compatibility of the bride or the Yeah, groom. Right. It was more Right, about right. families, you know, what their family does, what does they do, what do they do. And somehow from the childhood, I always wanted a partner with whom I can have a decent conversation. And I did not find that point or that topic ever considered in any marriages of my cousins I had witnessed. I always had this mind, and coming to Chandigarh, coming to an independent city, staying for 5 years here, managing things on our own, that kind of consolidated that. So I was sure that I don't want to go for an arranged marriage, but I did not have guts to love anyone, because I was not sure my family would approve of that. So I was in a fix. I don't know. हमारी लव मैरिज ही हुई है ना. Just to be clear. Just to be. हमारी मैरिज हो चुकी है. Just to be on a little more safer side. Beautiful. So what I can see in you is that you don't waste your energy in fighting the fights which are useless. So you have your strong opinion. You're a smart girl, but you do not waste. I don't engage much Yeah. in arguing. Yeah, I can see that. Everybody's like, I okay, can this see is that. right. Okay. Like, okay, that's okay. That's okay. Fine, I move on. Yeah, yeah. So you don't waste your energy in fighting. So you have Not even, that's good and bad in both the sense. Okay. Because good that you keep your mind sane, and bad that somehow even if you are right, you are not able to express. express that, or express that in a good way. Right. Either I'll get aggressive, or All right. I will walk out. So both things do not put you in a good picture. Okay. So Okay. I So think that has been if you have right things in your mind, one should know how to convey them properly. I lack that deeply. right. 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 Know that you are aware about it, so you'll get there. Obviously, you Yeah. have too much life to live. So You'll be fine. So आप सिविल्स की तैयारी करने के लिए पहुंच गए. What clicked? I worked at Infosis, right? Right. So I have seen girls, with all due respect, whatever phase they were at. So they were like
if I'm going to a tapri for a cup of tea, they'll like say, yeah, they'll down market those things. For me, everything is equal. That's how I believe the word should be. For my word is like that only. That even at Taj, if I'm having a tea at a Taj or at a tapri, I'll just enjoy the tea. It doesn't matter. Yeah. And so if I'll ask any my colleague back at Infosis कि चल यार टपरी पे चाय पी के आते हैं, तो they'll react very differently कि नहीं यार that is so down market ये सब that I never liked. Right. That doesn't gel with my word. तो ऐसा हुआ कि हमें चाय पीने जाना था, मैं था, मेरा दोस्त था. We decided to go for a cup of tea. हमने इससे पूछा रिचा से कि चलो यार टपरी पे चाय पी के आते हैं. She said हाँ चलो. तो that is what a cultural shock for me. कि मैं कहा यार ये तो शी इज़ वेरी डाउन. शी वुड कम ऑन अ बाइसिकल. अच्छा. मतलब जहाँ पे लड़कियों के इतने शोशा चल रहे थे जो मैंने देखे, राइट, शी वाज सो डाउन टू अर्थ, सिंपल और सॉर्टेड. वो उधर फेकनेस नहीं था, जेन्युइन बहुत ऑथेंटिक थी, अभी भी है. राइट. तो वो ऑथेंटिसिटी जो थी इनकी वो बहुत अपीलिंग थी. राइट. एंड हर लाफ्टर, शी वुड लाफ लाइक एनीथिंग, लाइक पूरा खुल के. तो कभी भी क्लास में अगर कोई जोक मारते थे हमारे सर, शी वॉज दी ओनली वन टू स्टार्ट द लाफ्टर एंड क्लोज इट. बाकी सब तो बीच में छोटे मोटे बच्चों की तरह आते थे ही करके शी वाज लाइक हा 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 हा. वो रिस्पॉन्सिबल है ना, सो शी स्टार्टेड एंड फिनिश इट. यस, सर को भी लगेगा अच्छा जोक मारा है. राइट, राइट. सो हर लाफ्टर वाज रियली वेरी contagious, very right? magical. And for you? Thanks. If at all anything. दोस्त ना यार. We had a winter session. Achha. And in this complete 4 months, he just came in 2 jackets. I thought, which guy does that? He would come 1 month with a full shave and next day he's clean shave. So it was, I mean, it was like, people take, men today, nowadays, boys also take very good care of how do they look, and he was like totally chill. The main thing that kind of, impressed me was, he was not a patriarch by mindset. And I had seen my experience with men was, a little dominate, yeah, don't do this or don't do that. Like, I really enjoyed coming on bicycle. So I would, when I would go back and I would sing songs and I would just be myself, right? And one day he was like just escorting me kind of because it was dark. And I started singing and I stopped. And then he asked what happened. And I said that I thought you'll scold because that's what my brother would do. He would say, what are you doing? Don't sing. You are creating attention towards yourself. So he was like, why would I do that? You just be, enjoy, I'm there for you. I'm here. If anything happens, I'll handle you. Just enjoy how you are. So that was a big shift. My dad had also not been quite the patriarch. I mean, he would help my mom with the chores, household chores. He would cook, he would clean, he would do whatever is necessary, right? And I loved that since childhood. But the society was not very good to him. They would, taunt मजाक him. उड़ाते हैं. जोरू का गुलाम आ गया. जोरू का गुलाम आ गया. है ना? और क्या बोलते हैं? लड़की बन गया. मतलब इतना नहीं, बच्चों के सामने भी नहीं बोलते हैं. बट ये था कि हाँ जा बीवी आगे तुझे काम करना होगा. So I was kind of hurt कि ऐसा क्यों है? You guys are unlucky that your husband doesn't pick a glass. You have trained that. Why are you? I mean, why are you taunting my dad? जो normal होना चाहिए. Yeah, exactly. Right. If my mom is working, my dad is working. If he came home 2 hours early, he's rested. He can help. He should help. अच्छा, एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आती. If 2 people, they're having whatever arrangements they have in their own house, they're happy. Whatever it is, I'm saying cooking, washing, cleaning, whatever it is 2 people making whatever arrangements, and that's working for them. They are happy, happily married. What is your problem? What is your problem?
यही तो था छोटे शहरों का माइंडसेट दैट आपको अपने घर से ज़्यादा दूसरे के घर में क्या हो रहा है ना उससे. एंड ग्रोइंग अप वाचिंग माय डैड माय ब्रदर काइंड ऑफ टर्न प्योर patriarch because he did not like whatever was being said to my dad, so he kind of grew against that, like okay, like a normal Indian man, rebel to that they turn out to be. So and most of my cousins were like the way my family, my cousins would shout at my bhabis if something in the food went wrong, or if somebody, like, they would scold them in front of everyone. And I was like, how, no matter guests aaye hain, koi aaya hai, how could they do that? Yeah, I mean, I did that particular part was scary, and that's why I did not want to go into an arranged setup. So her click is me not being patriarch. Yes. Nothing else she likes in me. Basically he wants Thanks, to, my friend. I tried. Yeah. But that was the biggest, I think, that I got comfortable with him. Right. That's the biggest Secondly, factor, man. He had a very safe vibe, if I can say. Like, see, there's a sixth sense in girls, right? Yeah. We can sense that how a person is looking at you, especially a boy. Like, they're normally sizing you up, right? Right. So I never had that kind of vibe from him. He was always very gentle. He was always never had any kind of that feeling in his eyes or in words that would make any girl uncomfortable. Till date, all of his friends, more than me, they talk to him. Right. Because he gives that safe space to talk. So that was a very new experience for me. For you. And he was a very jolly and a jovial person, right? He loved to drive. He used to come on a bike. Yeah, he had a little mild issues in his walking, hardly visible kind of things at that time. And when we started talking, he was very upfront. He told me, I mean, second or the third day when we started talking as friends, because I was supposed to be teaching him, right, that he had MS. And I just scolded him. I was like, how dare you do such kind of a joke? ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? This is not something to be joked around. It's a very serious disease. Right. And he's like, "Nee, I have MS." Because he was such a jolly person. He's driving a bike, and me being a biochem student, we had a chapter on MS. So I knew what exactly is happening. So I could not relate him with the things that are taught to us. So that was okay. Well, he was upfront, honest about it, and that kind of soft corner. It starts, you kind of develop a soft corner. So उसका exploit किया इसने ढंग से, and that's how we ended up being married. मैं तो सोचा मैं तुम्हारी किताबों का राजकुमार हूँ. You had a chapter. She said she had a chapter. हाँ, she was reading about you, dreaming about you. है ना? कोई अच्छी किताब पढ़ लेती तो मैं अच्छे करेक्टर हो जाते. So आपको भी वही safe space feel हुआ? Probably for the first time in your life? Like जैसा उनको लगा? मुझे लगा कि before I get into any friendship with any person, I should put the worst thing that is going on with me. तो मैंने उनको practically सारा बता दिया कि अभी कोई attachment नहीं है, तो ठीक है, अगर आगे जाके हम और गहरे दोस्त बनते हैं, तब तो कौन ही सोचा था कि ऐसे साथ आएंगे. हाँ, तब तो वो फीलिंग्स भी नहीं थी. तो ऑन फर्स्ट सेकंड डे मैं बता देता हूँ, हर एक कोई बता देता था कि भाई मुझे MS है. बिफोर यू स्टार्ट सस्पिशन इन माइंड कि ये ऐसा क्यों चल रहा है, इसको थोड़ा लिम्प क्यों है, आई अपफ्रंटली टेल कि भाई मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. नथिंग मोर देन दैट. Were you using it as a thing to shoo away people from you? You can say it on the, like, rather than filtering people. कि I don't want to open up, so भाई ये है, निकल जाओ. If you can deal with it, निकल जाओ. You are most welcome in my life. Otherwise निकल जाओ. It's a nice filter, I thought. Yeah, okay. तो कल को कोई आगे बोलेगा कि आप तुमने बताया नहीं. Now you are telling me. So she knew from second day. And जब वो information share हुआ और उसके बाद एक समय where you started developing feelings for him, how did you dealt with that question? Because एक होता है, it's a good friend. Okay, good friend.
but then you start. Abhay, you are That's a asking tough question. so tricky questions that we haven't even actually answered them in so many years. That's a good question. That's really a good question. I mean, feel free if you're otherwise. Maybe. If I have to answer it in one line, Ji. it was I took a leap of faith, because what I had read about MS or what I knew about MS, hardly there was anything about it in his persona or his personality, and he had it for around 6-7 years by then. So I took a leap of faith ki okay, matlab maybe science is not everything, maybe science is not always right, that this is the only path. So I took a leap of faith, and I had, see, every girl measures pros and cons. So the kind of comfort that I had with him, I had not found it till that I could be myself with him, I could open up with him, I could feel safe with him. And we had good, great conversations about life, about everything we want to. We are very poles apart. I am a reader, he watched movies, he never picked a book except his course material. So we were very different, but on certain points we were very similar. So Actually, those are the big points. yeah, where we matched, where we clicked, where we connected. And I thought that I am not going to find these qualities in any boy that my mom would choose or my dad would choose, because these things won't matter to them. If I say that if I come back home and I want to have a decent conversation about, okay, let's say, how do you see yourself in 10 years, or what do you think life is, or if we had this event, how to improve ourselves on these things, they don't matter. For them, it's generic lifestyle. Once you get married, get a job, get a baby, and get another baby, and just continue that cycle. So there was this thing, and it was a big thing, right? I had to, that was one thing that was keeping me away from committing. I liked him, but I did not commit to him. But then one magical night happened, and that was a very magical night. I kind of felt that, maybe this is what destiny is, or maybe this is something that can bring good. It's hard to explain, but there was this, we went to Kasauli, and then we went, and everything, like every tiny detail that we were asking was being answered. I'll share that story. She's just killing that story. That's the best 3 days? 3 days. That was the best 3 days. So मैंने plan किया कि चलो हम लोग कसौली चलते हैं. We had a break. और yeah, with all decency, yes. And हमने कहा चलो कसौली चलेंगे, and then हम चले गए, बहुत नज़ारे वज़ारे ये सब. फिर वहाँ मुझे मैसेज आया कि अगले दिन भी छुट्टी है. उस दिन हमें छुट्टी थी, हम क्लास छोड़ के नहीं गए थे. तो वी हैड अ ब्रेक, और बहुत दिन से लगातार चल रहा था. हम अगले दिन भी छुट्टी. मैं कहा अरे वाह. कसौली से थोड़ा और ऊपर जाएंगे, शिमला से आगे, तो एक स्टेशन पड़ता है हाटू पीक, नारकंडा में आएगा. एक पहाड़ है, बहुत मज़ेदार. दैट वाज, तो मैंने इसको बोला कि यार चलो हाटू पीक होके आते हैं, कल छुट्टी है. तो कहती है कहाँ है. मैं कहा अरे बगल में ही है, कोई बात नहीं. तो उसने कहा ठीक है. वो बगल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, 7 घंटे दूर थे वो बगल. तो हम अगले दिन मैं इसको हाटू पीक लेके गया, और मैं इसको बोला कि यार पता है मैं इतने सालों से घूम रहा हूँ पहाड़ों में, मुझे आज तक स्नोफॉल नहीं मिली. इट वाज 19 अप्रैल. तो चलो ठीक है, इसने भी इग्नोर कर दिया, मैं क्या करूँ ऐसा वैसा. हम एक जगह पहुँचे, उसका नाम था ठियोग. वहाँ पे बरसात शुरू हो गई थी बहुत ज़्यादा, और सर्दी बढ़ने लगी. तो हमने कहा यार हाटू पीक का पता नहीं, क्योंकि वो बहुत स्टीप है. वो 6 किलोमीटर की रोड है, और 1 किलोमीटर का 1000 मीटर का ऑल्टीट्यूड गेन कराती है. तो दैट इज़ वेरी स्टीप रोड. और बाइक थी, और बारिश भी हो गई थी, ठंड हो गई. मैं कहा एक रूम यहाँ ले लेते हैं ठियोग में, अगर नहीं जा पाए तो यहाँ से रिटर्न मार लेंगे, क्योंकि अगले दिन तो क्लास है. तो वहाँ पे हमने फटाफट जो भी कुछ वार्म खरीद सकते थे खरीदा. सर्दी बढ़ती है, फिर बारिश रुक गई. तो मैंने होटल वाले से कहा भाई ये हमारा बुक करके रखना, हम हाटू पीक जा रहे हैं, अगर नहीं जा पाए तो हम वापस आ जाएंगे. एंड होटल वाला हंस के बोलता है ये हाटू पीक जाएंगे. मैं चल ठीक है. तो अपना काम कर, हम हाटू पीक गए. अब हम
पीक से 500 मीटर नीचे, और अचानक से स्नो। और वो ऐसे मैंने मजाक में बोला था होटल में ही कि आज अगर मुझे स्नोफॉल मिल गई ना, कोई मतलब ही नहीं था इस बात का, तो मैं इससे शादी कर लूँगा। देखा he had bad intentions। मैं बोलती हूँ मैं इसको बोला आज अगर मुझे स्नोफॉल मिल गई तो मैं इससे शादी कर लूँगा। एंड इट वाज 19 अप्रैल। मुझे लगा था भगवान कभी इतना बुरा नहीं हो सकता। तो हम गए और 500 मीटर जस्ट बिहाइंड द टॉप हमें स्नोफॉल मिल गई। एंड वी वर लाइक वेरी एक्साइटेड। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, शी वॉज वेरी स्कैर्ड। हम जब उसके टॉप पे पहुँचे, इट वॉज एट सच अ हाइट कि स्नो आपके ऊपर से नहीं, आपके सामने से ऊपर आ रही है, मतलब नीचे से ऊपर आएगी फेस पे, बिकॉज ऑफ द हाइट। तो ऑब्वियसली सामने वाले पहाड़ पे वो स्नो हो रही थी और हवा ऐसे चल रही थी। एनीवेज मैं कहा मज़ा आ गया यार ये सब वो सब। पर हम एनफली क्लोथ नहीं थे, बहुत सर्दी लग रही थी, मेरे हाथ नीले पड़ चुके थे। जब होश आया कि हाँ वापस भी जाना है, तो मैंने से कहा यार क्या करें, बहुत सर्दी हो रही है। तो कहती नीचे चलो वापस। मैं ये लड़की पागल है, मेरे उंगलियां नहीं मुड़ रही हैं, मैं क्लच नहीं दबा सकता बाइक का, मैं नीचे कैसे लेके जाऊंगा। अच्छा। तो वहाँ से थोड़ी सी 200 मीटर नीचे एक रिजॉर्ट करके है अज्ञातवास, वो बहुत ही कम लोगों को मालूम है। वहाँ पे मैं पहले अपने दोस्तों के साथ रुक चुका हूँ, तो मुझे मालूम था उनके पास ऐसे कॉटेज वगैरह रहते थे, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। तो मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, रूम चाहिए। बोले सर रूम तो नहीं है, सारे रूम बुक है। तो एनीवेज मैं वहाँ गया नीचे, और एक और छोटा मंदिर था, वहाँ पे बैठे हुए थे। और मैं ऐसे ही भगवान जी से बोला, भगवान जी मरवाओगे क्या, लड़की को पहली बार लाया हूँ, एक रूम तो दिलवा दो। तभी नीचे से एक भाई साहब आ रहे थे, बोले क्या हुआ। मैं कहा फंस गया जी, बर्फ़ गिर गई। तो कहते हैं यहाँ नीचे जाओ, उनको बोलो कमरा दे देंगे, वो दे देंगे। मैं कहा मैंने फ़ोन किया, वो मना कर रहा है। तो कहते मेरा नाम ले देना। मैंने आप कौन, बोला मैं मालिक। मैं ठीक है भाई। मैं नीचे गया, फिर हमें कमरा भी मिल गया। तो वो रात वो थी कि मैंने स्नोफॉल मांगी, स्नोफॉल मिल गई, मैंने रूम मांगा, मेरे को रूम मिल गया, मैंने लड़की मांगी, मेरे को लड़की भी मिल गई। राइट। तो दैट वाज वन मैजिकल नाइट। हाँ, फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, लेट्स टेक इट सीरियसली एंड कमिट टू इट एंड कमिट लेटर, बट लेट्स टेक इट सीरियसली। लेट्स टेक इट सीरियसली। देखते हैं कि हम कंपेटेबल हैं कि नहीं है। एज यू कैन सी 11 years later we are still finding it out कि हम compatible Still finding the compatibility. Right. और इसमें आप कुछ ऐड करना चाहोगे या? Yeah, I kind of believed in signs, you know, so I took it as a sign. As a sign. That okay, maybe this is something bound to happen, but I had my reservations. So I came back and I told you that I had done an art of living course, and I wanted to meet Shri Ravi Shankar, and just wanted to kind of validate it from him, because I kept him at a very high pedestal. Right. And he also somehow validated that. Okay, just get married, just get rid of me, just Yes. just get married. Yes. So I took that as a sign. I took it as a leap of faith, and I Then just. So दोस्तों का वैलिडेशन बहुत मैटर करता है, खासकर हमारी फैमिलीज में जब हम उनसे ये सब बातें नहीं कर सकते, उनके ओपिनियंस नहीं जान सकते, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दोस्त बचते हैं। अच्छा यार, दिस व्हाट आई एम फीलिंग, दे नो आप किससे बात कर रहे हो। Rather than your parents, your friends see you getting into the romantic relationship, getting into the world, your dreams, your insecurities, your fascinations. We don't share our fascinations with our parents. We don't share our needs with our parents, right? उसमें दोस्त का ओपिनियन बहुत बड़ा ओपिनियन होता है। फ्रेंड्स आर टेलिंग यू यू आर एन इडियट, राइट? वो करेज वेयर आपने क्या बोला खुद को उस समय में? See, if I had once I committed to him that I'm gonna be with him, so that it was not easy, but yes, I would like tell them okay, I have committed him. I have told him that I'm gonna marry him, and they were like, hey, nothing has happened, you guys barely know each other, you know what is that? And I was like, see, this can happen to anyone. I would give all those logics which I gave to myself, but they were still like, okay, it's not a big deal. But again, see, at the end of the day, what you see in the mirror is yourself. And if I had committed to him, and if I would have backed down because of a thing that I already knew,
I could not have lived peacefully with myself. Beautiful. That's the major thing, I think, that kept me going. There was this beautiful quote by Shri Shri Ravi Shankar, and he said that you need commitment when life is difficult. When situations are difficult, that's when you need commitment, that's when you need discipline. When it's easy, you can't call it a commitment. Beautiful. So that was the thing that, kept me going. A friend of mine, she was Rosie. She had met him, she knew him, she liked him. She still had an opinion that I should not be there, but she was supportive. And that was the maximum support that I got. And slowly when my roommate, I told you about Pooja, when she got to know him better, Right. she was supportive. So the two friends of mine then became my biggest support, because things used to get difficult and you need somebody to Yes. talk to. I need somebody to Yes, talk to. I'm a yes. kind of a person. I need somebody. So I could talk to them because I could not talk about this to my family. So I had two good, strong pillars who turned Beautiful. into good pillars later on. That kind of sailed me through. Beautiful. And I'm curious, आपको अपनी कंडीशन का पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है क्या रिस्क्स हैं, क्या अप्स हैं, क्या डाउन हैं, right? And you're an oversensitive person, right? And you must have seen her falling for you. How you have dealt with that? See, what he really wants to ask is that why did you even decide to marry and ruin my life? वो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहती. मैंने भी नहीं छोड़ी. मैंने इनके साथ साथ इनकी फ्रेंड्स को भी पटाया है. राइट. सच्ची बात बताऊं तो अगर मुझे ये तस्वीर जो आज है वो उस वक्त दिखी होती तो ये मेरी ज़िंदगी में नहीं होती. मैंने पहले भी बोला कि मैंने अपने रूम पे बैठे एलिफेंट को एक्नॉलेज ही नहीं किया. इट वॉज मेयर अ थिंग कि मुझे मल्टीपल स्क्लेरोसिस से फाइट कर रहा हूँ, दैट इज़ इट. इससे ज़्यादा इट मेंट नथिंग मोर देन दैट टू मी. हैड आई बीन इन द नोन दैट this much devastation can happen, I would have never let that happen to her. But मैं खुद ही बेवकूफ़ था. मैंने खुद ही नहीं देखा, मैं खुद ही एक्नॉलेज नहीं कर रहा. उसके चक्कर में ये हो गया. Every day when we were studying or we were there, and we would love to spend our time with each other. Time together. Like every time we would run back to each other. We'd love to spend that much That time. is true for this day as well. Right. Till date. Right. Like we are so crazy to spend time with each other. I mean, I said that कि अगर if I were in the known that this would happen, I would have never gone for this marriage. But the fact is कि the time that we spend together is, we treasure that so much that Till date. Till date, like we are growing older, Just still rush back home. We are Wow. eager to rush back home. we hug, we do Right. all the cases, like Right. बैठो पास में. We can talk for hours, man. Beautiful. Hours. Like हमें रात हम दूर रहते हैं, we two live together, और हम शाम को 5-6 बजे तक घर पे आके and we are talking. 6 घंटे कौन बात Wow. करता है? We talk. Wow. We share so much, we connect so much. And in between we have our common, like we both have passion for traveling. So we both travel. जब भी travel करना होगा, she is, भाई चले आ रहे, चलो यार कोई चक्कर नहीं. Bhai. I am calling you भाई चलो. You're not calling me भाई. Like bro. Like Bro, हाँ, bro. let's go, bro. Bra kind of. That kind. So we connect in that few places. Right. आप लोगों ने जब डिसाइड कर लिया that let's give a name to this relationship, let's get married. So वो family की struggle कब शुरू होती है? So we didn't tell them for years altogether. And when she got much age and they were worried, then we said ठीक है. Was it intentional? कि Few years I did not. लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है Yes. in our society because बहुत सारे रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं. वो बोलते हैं क्यों नहीं? अच्छा मना कर रहे हो तो क्यों मना कर रहे हो? कारण तो बताओ. Yeah. Right? It was not easy. Yes. Few years, I think 2-3 years, I did not tell them. 2 years maybe. But then when I told them, then it was another fight. I did not tell my family that he had MS. But he had
visible symptoms, so we just kind of, made some lame excuses. That he fell from a bike, he got some issue in his spine or oversitting and everything, which was difficult for them to believe. They always kind of asked me, that there's something that you're not telling, there's something that you're not telling, there's something that you're not telling. I was like, nothing. Because I knew if I tell them that he has MS, they would never agree. And I was strongly believe that if they won't agree, I won't marry. I mean, I kind of, even if they don't really feel like it, but I still want their blessings. Right. Okay. So that kind of lingered on for around 4 years. So it was a very, very, very difficult time. Yes. I'm glad I'm past that. If I could have handled it better with today's intelligence, yes, I think I could have handled that better. I would have told them upfront. Upfront, I would have told them, which I thought I am doing good to them by not telling them. But it did not do any good, neither to them nor to me. Right. And this is also, if you go live with this podcast, then they're going to know that I knew it before wedding. Because even post-marriage, I told them one day that it's a recent diagnosis. Right. And आपकी फैमिली में आपने कैसे ये बताया? There's a girl called Richa और मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ. मैं रिचा से हमेशा ही कहता था कि शादी इज़ जस्ट अ सर्टिफिकेट. Right. जो हमें समाज में रहने में थोड़ा और ईज़ करेगा. बट इफ़ यू आस्क फॉर द कमिटमेंट लेवल, वो सर्टिफिकेट से नहीं है. आई एम कमिटेड टू यू एंड दैट इज़ द ट्रूथ. वो इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग है. तो आई एम कमिटेड. एज सिंपल एज दैट. शादी हो, शादी ना हो, आई विल बी देयर फॉर. इट्स अ सोशल एग्रीमेंट, राइट? सोशल एग्रीमेंट, वो तो पार्टी वार्टी कर ली, चलो ठीक है. लोगों को बता दिया कि भाई हमारे लड़के की शादी हो गई है. राइट. That's it. Nothing much. So it's not a very important event for me. But at the same time, I do understand its importance for a girl. She was glowing. Right. On that day, she was glowing. Beautiful. She was glowing so much कि मैं वहाँ पे हॉल पे बैठ के वेट करता. She came and I stood up out of respect. She was glowing so much. Out of respect. नहीं, ये तो मेरी वाली बंदी है भाई. ये सीक्रेट सब लोग आपसे जानना चाहेंगे कि अपने पति को कैसे खड़ा कराना है out of respect. Is it still working? Is it still? No. Only when I dress up like that. Oh, okay, that's good. We'll have to get married again. Okay, that's interesting. Yeah, we have this wish. I have this wish that I'll get back on my feet. I'll walk, and then we'll go to Hatu Peak, and we'll get married again. Beautiful. God bless, man. It should happen. Thanks. Should happen. Right. And you are invited, by the way. You are my first invitation. Thank you so much, man. Thank you so much. And so घर पे न्यूज़ बता दी और फिर शादी हो गई. आप चंडीगढ़ आ गए? 4 साल बाद. 4 साल बाद. The delta is 4 years. 4 years. And 4 years में again lot of struggles, lot of anything you want to. See, health was going down. Family का pressure था, health का pressure था. And दोनों मतलब this is. We both have fought our individual families to stay together. And with each other. And not just, yeah, with each other too, right? We had a lot of fights because ultimately that stress which you get, somewhere it's gonna come out. So nobody, neither his family nor my family, not even the astrologers, nobody was, for this marriage. And we had... And his health was going down. From bike, he had shifted to a car because it was getting difficult to drive a bike. So, yeah, that was a tough time. But still, we got married. And I had many doubts. I was like, am I doing the right thing? Am I not ruining my life? What am I doing? And there were moments when I was like, I wanted to get out of it. I had those moments. Right. But then what I said that, okay, when I look in the mirror and I was like, okay, is this you that when things will get tough, you're just going to run away? And how far can you run? Where can you run? What if something happens to you? Right. And your partner runs away? How are you going to feel? Right? All this thing that is happening is not anyone's fault. How can you punish a person for something which is not his fault? You have to punish him. You can't punish God. You can't punish him. So, सबसे
सबसे मुश्किल होता है खुद को सेटिस्फाई करना. सबसे मुश्किल होता है खुद के क्वेश्चंस को आंसर करना. आप सबको बहुत लॉजिकली आंसर कर देते हो, बट सबसे मुश्किल चीज़ होती है खुद को कन्विंस कर पाना. और जनरली एक क्वेश्चन जो बहुत हॉन्ट करता है, वो क्वेश्चन होता है वाई मी, राइट? वाई मी? देयर सो मेनी पीपल. आई वाज लिविंग अ परफेक्ट लाइफ. यू माइट हैव आस्क्ड टू गॉड, वाई मी? टू आंसर दैट क्वेश्चन यू नीड करेज. आई एम इंटरेस्टेड अबाउट वो करेज. पहले तो वो आंसर आपने कैसे दिया और वो करेज कहाँ से आया उसको आंसर करने का. वाई मी का स्टेज तो आता ही है, वो आया भी था और वो ज़्यादा देर परसिस्ट नहीं कर पाया बिकॉज पता नहीं कहाँ से ये थॉट आ गया कि यार वाई मी इज़ एन एंडलेस सर्च ऑफ परसूट. तुम तो किसी भी मतलब वाई मी इज़ लाइक एवरीबडी कैन आस्क दिस क्वेश्चन फॉर एनीथिंग. वाई मी? इफ़ नॉट यू देन हु? तुम ही बता दो भाई. तो या तो टेक दिस बर्डन कि तुम उसको बीमार करना चाहते हो तो बताओ. तो वो करेज था नहीं कि मैं उसको मतलब देन आई ओनली आस्क फॉर करेज कि देखो जो दिया है वो कोई बात नहीं, बट अब लड़ने की क्षमता दे दो. सो इट्स दिस व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इस स्टेज से इस स्टेज पर आना दैट आई ओनली आस्क्ड फॉर करेज. आई स्टॉप्ड आस्किंग दैट क्वेश्चन एंड आई आस्क्ड फॉर करेज, व्हाटएवर इट इज. द स्टेज फ्रॉम व्हाई मी टू दिस इज व्हाट इज अ big achievement. It's a big jump. वो कैसे आया? कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर से आया, खुद में आया, किताब पढ़ के आया? नहीं, मुझे नहीं लगता वो सपोर्ट स्ट्रक्चर से आप मेरी लाइफ में आ पाता. वो थ्रू द चर्निंग, थ्रू द थिंकिंग, थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू गोइंग थ्रू द पेन एंड द प्रोसेस, उससे आया. सबसे पहले तो वही कि भाई हम खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था कि मैं भाई ये हो गया, दिस इज़ अ डन डील. अब मल्टीपल स्क्लेरोसिस से तुम्हें फाइट करनी है. दिस इज़ योर डीमन, यू हैव टू फाइट विद इट. वंस एक बार, हाँ आई रिमेंबर दिस डे वेरी क्लियरली. एक बार मैं कार चलाने में छूट चुकी थी, मेरे से नहीं चल पाती थी. तो रिचा ऑफिस लेके जाती थी, लेके आती थी. रिचा लेके आ रही थी एंड सडनली दिस थॉट क्लिक कि एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब और नहीं. उसके पहले तक सारा पेनफुल प्रोसेस वेयर यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ, यू आर गोइंग डाउन एंड क्वेश्चंस ऑफ व्हाई मी एंड लाइक एवरीथिंग वाज सो सॉल्टी, यू कैन नॉट इवन टेक अ बाइट. एवरी पीस ऑफ लाइफ वाज सो सॉल्टी. बट वो एक दिन था व्हेन दिस थिंग एनफ इज एनफ, बस और नहीं. उस दिन से वो वाई मी का क्वेश्चन खत्म हो गया. उस दिन से एक्सेप्टेंस, मन में ये थॉट आया कि दिस इज मी, दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज, दिस इज द रियलिटी. My reality is I'm fighting with this demon. My truth is I'm strong. So with my truth, I'll fight my reality. Wow. And I'm doing that. And that day actually started when my word started spinning differently. From that day. From this thought that I'll fight my reality with my truth. What is my truth? I'm strong. मैं ऐसे ही नहीं हुक्का पनी में आया इस दुनिया में. आई हैव कम हियर, आई हैव अराइव्ड, आई एग्जिस्ट, आई एम लिविंग. उसका कुछ तो मतलब है ना भाई. राइट. इसका मीनिंग क्या है वो मैं डिसाइड करूँगा कि व्हाट्स मीनिंग ऑफ माई लाइफ. राइट. दैट विल नॉट बी डिसाइडेड बाय एनी अदर फैक्टर. वो उस दिन से थॉट चेंज हुए. देन स्टार्टेड थिंकिंग ऑन माई सेल्फ, एक्सप्लोरिंग माई ट्रूथ. व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट इज माई स्ट्रेंथ. वो ट्रूथ को एक्सप्लोर करते करते ताकत बढ़ती रही. And then my focus shifted from the lacks to the abundances. Wow. When this shift happens, तो ऑफिस में चीज़ें चेंज होने लगी या मुझे डिफरेंट दिखने लगी. ये कहना मुश्किल है. राइट. मेरी दुनिया बदलने लगी या मुझे ऐसी दिखने लगी, पर जो भी था चीज़ें सही लगने लगी. हमें एक ये बहुत ही बड़ा मैजिकल मोमेंट था. मेरी वाइफ मुझे डिनर पे बाहर लेके गई थी. नॉर्मली हस्बैंड लेके जाते हैं, मेरी लाइफ में ये लेके जा रही थी. तो हम गए जहाँ पे हमने पार्क किया. रिचा ने व्हील चेयर पुल करी, मैं उसमें बैठा. वी वर गोइंग, सडनली अ पर्सन केम. उन्होंने रिचा को धक्का देके मेरी व्हील चेयर खींच ली. अरे भाई साहब आप मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ. अरे मैं कहाँ हूँ आपके, आप मेरी गाड़ी चलाओ. मैं आपकी गाड़ी नहीं चला सकता, मेरे से नहीं चलती. अरे नहीं आपसे चल जाएगी, आप मेरी गाड़ी चला के देखो. वो उतनी फास्ट स्पीड में मुझे अपनी गाड़ी की तरफ ले गए. उन्होंने डोर ओपन किया, उन्होंने उठाया और बिठा दिया. मैं ये कहता रह गया मैं नहीं चला पाऊंगा.
उन्होंने बिठा दिया क्या देखो ऐसे स्पीड है और ऐसे एक गियर लगाओ ऐसे ब्रेक है. दैट वाज हैंड ड्रिवन कार. वाओ. दैट वाज अ हैंड ड्रिवन कार. और उधर बैठ के जैसे ही मैं बैठा एवरीथिंग चेंज्ड. मैंने उसको ऑन किया. आई ड्रोव फॉर 100-200 मीटर्स. वो 200 मीटर भाई मेरी ज़िंदगी के एक दर्द को मिटा गए. जैसे रबड़ ने सारे जो निशान पड़े थे कागज़ पे सब मिटा दी ना, वो 200 मीटर ने सारे दर्द मिटा दिए. एंड देन द न्यू लाइफ स्टार्टेड फ्लोइंग विद इन मी. मैं कहा yes. And I have a passion for traveling. I have a passion for drive. I would take Richa when we were dating. I would take Richa like every now and then to Himachal, to mountains and every places. And 3 साल से मैं गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठा था. And everything was like कि भाई खत्म. Life is the end. Let it go. जो सांसें हैं इनको भी लो, जाने दो. But वो पर्सन ने वो 200 मीटर चलाए. मैं मज़ा आ गया. एंड देन वी प्लान टू बाय अ कार. हम लोगों के पास इतना फंड्स रहता नहीं है तो भी हमने थोड़ा फंड्स इकट्ठा किया. जनवरी नेक्स्ट, ये सितंबर का बात था मेरे ख्याल से. ये सितंबर की बात थी. तो जनवरी तक वी हैव एनफ फंड्स. तो हमने कार परचेज़ किया ऑन लोन. वो ऑटोमेटिक कार थी. और फिर मैं उन भाई साहब को ढूंढ रहा हूँ. उन भाई साहब ने अपना कार्ड दिया था, लिंक्डइन एड्रेस दिया था, अपना नंबर दिया था. वो भाई साहब विलुप्त. ही डिसअपियर्ड लाइक एनीथिंग. वो मिली नहीं कहीं. फिर उनको ढूंढते ढूंढते मुझे कोई और मिल गए जिन्होंने आके मेरी कार पे हैंड ड्रिवन कंट्रोल्स लगाए थे. बट आई स्टिल फील दैट इज सच एन एंजेलिक थिंग कि कोई फरिश्ता है, कोई एंजल टाइप का. दे अपीयर्ड इन योर लाइफ. दे चेंज एवरीथिंग अबाउट यू इन जस्ट अ सेकेंड and they disappeared forever. Probably the life is so beautiful that we don't know that strangers अपने हैं या अपने strangers हैं. So true. Right? So true. फिर उसके बाद हमने वो ड्राइविंग, फिर हैंड कंट्रोल ड्राइविंग सीखने में टाइम लगा थोड़ा. फिर अपना लाइसेंस बनवाया क्योंकि इसका लाइसेंस अलग बनता है. दिस इज नॉट नॉर्मल लाइसेंस. Right. ये कार आप चला रहे हैं इसके लिए आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि मेरे को सरकार को दिखा के चलाना है कि मैं पब्लिक के लिए डेंजर नहीं हूँ. तो वो लाइसेंस बनवाया. वो भी एक अलग जर्नी थी. लाइसेंस के टेस्ट दिए यहाँ पे. एक बार फेल हुआ, दूसरी बार में पास हुआ. Right. फिर जब ये सब कर लिया तब लगा कि अब खुद को ये दिखाना है कि आई हैव अराइव्ड. You have arrived. आई हैव अराइव्ड. अब खुद को ये दिखाना है कि मैं आ गया हूँ. नाउ आई हैव अराइव्ड. इस मोमेंट पे जब आप पहुंच गए हो that I have arrived and there's a gush of life in you, उससे पहले सबसे गंदी फीलिंग होती है अगर कोई आपको जज करता है, राइट, विदाउट इवन नोइंग यू, एंड दे अज्यूम थिंग्स, राइट. क्या हैव यू एवर फेस्ड दैट? बिल्कुल सही बात है. लोग जज करते ही हैं. ये आपको इफेक्ट जब करेगा जब आप वीक हो गए, राइट. व्हेन पीपल आर जजिंग यू एंड यू कैन नॉट शो कि भाई ये जज क्यों. इफ़ यू कैन नॉट फाइंड द रीज़न बिहाइंड देयर जजमेंट्स देन यू विल बी जजमेंटल yourself. You're judging them back. Right. So this is like to and fro battle. ये तो कभी एंड ही नहीं होगा. वो आपको जज करें, आप उनको जज कर रहे हो, क्या फ़ायदा. Right. So I let it one way communication. They are judging me. I'm not judging them. और ये जब भी मुझे फ़र्क डालेगा जब मैं खुद में ashamed हूँ that I am on a wheelchair. If I am ashamed that I am on a wheelchair, which I was big time, I disconnected with my friends because I thought that they are superior than me, they are better than me in all walks of life, and I would think they would judge me. वही कहानी वहीं फंसती है कि जब खुद को एक बार अपना लिया कि हाँ ठीक है भाई, दिस इज़ मी. सेल्फ लव कहाँ से आएगा भाई? Once you love yourself, you are not at all bothered about the judgments. You have to understand that nobody else is going to understand you. That's a big part. You cannot change anyone else. Right. And actually there is no point. One thing which we did was that we were financially independent. So we chose to stay away from people who were not contributing good in our life. Right. And we decided to surround ourselves with people who were supportive. Right. So we made new family, which the friends are our new family. Family here.
family is supportive. They love you, they'll come, they'll visit, they'll do everything. But staying with them after a certain age, especially if your thoughts are not aligned, that can do more harm than good. Right. So one thing is जो फैमिली में challenges होते हैं, internal challenges होते हैं, लेकिन external practical societal challenges क्या होते हैं जिनको ये disease diagnose होता है या PWDs in our country. As a society, are we accommodating or we are not? We are not. Do you want to share something about it, your experience? So let's go to a cinema hall and find out how many PWDs are there. According to World Health Organization data, every sixth person in the world is disabled. Every sixth. Every sixth seat in a cinema hall should be occupied by disabled crazy. people. Mm-hmm. How many do you see? You go to a mall, how many do you see? Mostly you'll Hardly. see them begging. Yeah. I mean, this is Yeah. really bad. You go to a public toilet, there are stairs. I can't go. I'm forced to manage my own. And not just here, in offices too. यहाँ पे हम कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में जाते हैं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जहाँ पे जाना ज़रूरी है, आपका काम है वहाँ पे, Right. यू कांट गो. गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली है जिसके अकॉर्डिंग हर बिल्डिंग को जितना हो सके फंड्स के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करना चाहिए. तो ये हमें समझ में आता है, बट एज एन इंडिविजुअल हाउ वी कैन मैनेज, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इज डिफरेंट थिंग. बट एज अ सोसाइटी We are not. आई कैनॉट इवन बोर्ड अ ट्रेन. वो गैप रहता है ना, हाउ वुड आई गो? उसमें नहीं. हाउ कैन आई गो? In Australia, वहाँ पे when I was working and I would see people, and quite often you would see people वहाँ पे wheelchairs पे हैं और खुद they are managing themselves. और there's a section train के front में so that a driver can see, and वो एक ramp होता है उनके पास और वो ramp लगाते हैं and a person on a wheelchair can board a train. ब्यूटीफुल. चंडीगढ़ के एक रेस्टोरेंट है दास्तान, वहाँ पे रैंप है. बाकी हमें इतना आसानी से रैंप मिलता ही नहीं. तो हम एक ही पे जाते हैं, ज़्यादा ट्राई भी नहीं करते कि भाई वहाँ पे सीढ़ी होगी. इट फील्स बैड व्हेन यू गो समवेयर एंड यू कैन नॉट एंटर. Right. Feels bad. Anything else you want to suggest to government or to people, authorities, into businesses, if they can do one thing to be a little more accommodating? Consider PWDs as people, not as disabled. Then you will include them in everything. When you see them as disabled, you try to exclude. It happens in my office. It happens everywhere. क्या ऐसा बिहेवियर है जो आपको लगता है दिस इज वेरी अनयूजुअल, इट शुड नॉट हैपन एंड पीपल शुड बी मोर अवेयर एंड हाउ दे शुड? प्रैक्टिकली वी डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद ईच अदर. Actually, We all are living in our own different worlds. How to reach people and how to encourage them to come out of shadows so that a discussion can happen. yes. So as I just said, Ji. that every sixth person in India at least should be disabled, and we don't see that much. They are hiding. We hear the stories that parents जो है वो उनको give up कर देते हैं. We have emails saying कि हमारे बच्चे को ये है, क्या आप पाल लेंगे? They disown their child. Another thing is, you cannot ask a PWD to come out of their house to listen to us because they are already, I mean, this is like counterproductive. Like वो वैसे ही shadow में, why would they come out? They are hiding because of a reason. Until unless we don't address that reason, they won't come out. So how to reach them? With this NGO Hope and Humanity, we are trying to sensitize as many people as possible. We soon very going to organize this campaign for UDID cards, where we are going to sensitize normal people, the caregivers of the society who can help us. We need your help. It's true, we cannot stand on our own. We need, if I fall from the wheelchair, I cannot get back on. We need your help. We need you guys. And we need you to be sensitive enough to help us. मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने शेयर किया था अपना पर्सनल एक्सपीरियंस. डार्क फेज आता है, राइट? आपने अपनी वीडियो में शेयर किया था दैट आई एम गोइंग थ्रू डिप्रेशन, राइट? एंड यू एक्सप्लेन द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. डू यू वांट टू शेयर अबाउट दैट? व्हाट वाज दैट फेज? आपने
उस फेज को कैसे टैकल किया? बिकॉज मैनी विल बी डीलिंग विद दैट. डिप्रेशन में ना ऐसा होता था कि चलो ठीक है अभी कुछ कर लिया तो मन बहल गया, पर जैसे ही थोड़ा दिमाग में हलचल शांत हुई वो थॉट्स आने लगते थे, थॉट डिसेबलिंग, डिसएम्पावरिंग, विच वुड मेक यू क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस कि भाई मैं हूँ ही क्यों, मैं मरी क्यों नहीं जाता. एंड those are very crippling. They are more crippling than anything else, than multiple sclerosis itself. And so any other disease. मन से ही मैं हारने लगता था कि भाई कुछ नहीं हो सकता, ख़त्म कर, let it go. क्यों, why are you lingering on to this life? Let it go. और फिर जब बहुत दिनों तक इससे स्ट्रगल करता रहा, then I started realizing that I should dissociate two things. One is the physical aspect of depression and another is the emotional aspect of depression. Emotional aspect कि मेरी जीने की वजह ही क्या है? This is emotional question. And the physical aspect is the palpitation when your dopamine is sinking and you're feeling like lethargic and all those things. I figured out that I can address physical aspect of depression जी. much more quickly and effectively. So I wrote a diary कि उसमें मैंने जब मेरा मूड ठीक था, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं घूमने गया हुआ था, मैंने उसमें डायरी में लिखा कि क्या क्या चीज़ें मुझे एकदम से दे गिव मी जॉयस, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मुझे नेगेटिव उसमें लेके जाती हैं. एंड देन आई वुड कीप दैट डायरी, दैट पेज ओपन ऑलवेज. अच्छा. मैं किसी भी टेबल पे बैठा हूँ, कहीं भी काम कर रहा हूँ, दैट पेज वुड बी ओपन. क्योंकि अगर गलती से भी ये थॉट आता है ना, विद प्रैक्टिस आई मेड इट पॉसिबल कि मैं उस पेज पे देखूं. एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो टू द पेज ऑफ पॉजिटिव्स कि मेरे को क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं. एंड आई हैड चॉकलेट विद मी ऑलवेज कि चॉकलेट इंक्रीजेज डोपामिन. तो एक हेल्दी, मेरी वाइफ हेल्दी चॉकलेट्स बनाती थी घर की खजूर से, तो वो मैं रखता था हमेशा अपने पास और वो खा लेता था. जैसे ही मुझे लगता था ना कि कुछ फिजिकली कुछ मूवमेंट हो रही है, समथिंग इज सिंकिंग, हार्ट इज सिंकिंग, वो फटाफट फिजिकल एड्रेस किया. देन आई विल गो टू द डायरी कि मेरे को क्या क्या अच्छा लगता है. सो लेट्स से इफ आई एम टॉकिंग टू माई वाइफ इज समथिंग दैट आई ट्रेजर, सो आई विल कॉल हर इमीडिएटली कि यार रिचा फिर से ऐसा हो रहा है. देन शी विल टॉक टू मी, शी विल काम मी डाउन कि कोई बात नहीं, मिलते हैं, आ जाओ. मैं जहाँ भी मैं होता था शी विल आस्क मैं आ जाऊँ. अगर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने रखता था तो मैं कहता था आ जाओ. देन शी विल हग मी, शी विल कम्फर्ट मी. दैट वाज द थिंग दैट विल पुल मी आउट ऑफ इट. ब्यूटीफुल. So we can address physical aspect of depression easily, and then emotionally धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगा emotional aspect. But the thing is, अबे, finding this dichotomy, drawing this line that this is physical and this is emotional, this is a really very, this is hard work. This is hard work. Yeah. This is really, really hard work, and it needs commitment. So when one go to the gym, they are committed to the gym. They eat right, they work out, they sleep right. Everything is about them is healthy. So when you commit to find a solution to depression, you should commit yourself to this solution. This solution works. You take it, think it like a gym. You commit yourself to this solution and it will work. All you have to do is to train. You cannot lift 50 kg dumbbell on your day one. You will break your arm, or it won't even happen to you. You start with 2 kg dumbbell. So you start with minor practices. छोटी छोटी victories लेके आओ. अगर आपको दिन में सपोज करिए ऐसे thoughts 20 बार 25 बार आते हैं and 5 times you were able to conquer them, that's a victory. Celebrate. So have this journaling practice कि यार मेरे को दिन में 25 बार thought है, 5 times I was able to conquer it. 5 times मैंने ये किया, उससे ये हो गया. Have a proper scientific understanding and journaling. And you see, by the end of the month, you'll see कि you have conquered so much. अगर आपके दिन में 25 हैं तो आप एक हफ्ते आप 5 बार मैनेज करेंगे, आप नेक्स्ट हफ्ते देखेंगे आप 10 बार मैनेज कर रहे हैं. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने लगती है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ह्यूमन बींग्स आर मेंट टू सर्वाइव एंड राइज. राइट. हमारा वो इंस्टिंक्ट ऊपर आएगा ही आएगा, हम इसीलिए जिंदा हैं. We love to see the growth. This is what I see. I feel आप ऐसा सोचते हो ना कि अच्छा यार मैं यहाँ पर हूँ, स्टेगनेंट फील होता है. वो बहुत ज़्यादा जूम इन जब कर लेते हैं तो फिर लगता है ग्रोथ ही नहीं हो रही, क्योंकि ग्रोथ बहुत स्लो होती है. ग्रोथ इज स्लो. सो देखने के लिए आपको पुल बैक करना पड़ेगा. सो डोंट फोकस ऑन वेयर यू आर, जस्ट फोकस ऑन वेयर यू हैव कम फ्रॉम.
And just That's your journey, right? write your victories. Zoom out. Write your victories every time. Make sure that you enjoy your victory. Right. क्योंकि normally आप क्या करोगे कि अगर आप जर्नल नहीं करोगे तो बहुत जल्दी आप ये सोचोगे कि यार होता तो है नहीं कुछ इन चीज़ों से, because you don't have a data to back it up. Yeah, right. Once you have a data, you open a diary and you say अरे हाँ यार मैंने अच्छा सा काम किया है. Right. Then you get this confidence कि Right. हाँ. Right. Success and victory has a spilling effect. हाँ. एक victory leads to हाँ. ठीक है वो तो कर ही लिया था. हाँ. You can never be victorious in one big shot. Small Right. victories add to the big one. Right. आप अपना कैसे मैनेज करते हो? How do you manage? Because whenever I see you as a very powerful personality, very calm, very sorted. So you must be doing something. She's baking cookies. Right. See, if anything else is the reason, I just come back to him. And if he's the reason, then I go to my friends. For me, my cycle works that I need to let it out of my system. Okay. If I keep it within myself, that kind of damages me. So I need some ears to talk. So depending on who's the cause, so I talk to them. And if it's a lot of energy or if it's frustrating me too much, I try to go for a run or some physical exhaustion, so that the overactivity or the hyperactivity of mind cools down, and I have some blessing that I can move on, I can forget, I can let go about things. Something has come naturally, Right. and the other I have built it over the years. And that's Beautiful. true, man. जो मैंने कहा, जी. that is my personality. I cannot open up with people. But if you are something listening to this podcast and you feel that you are in depression, reach out to the support system and Yes. talk to them. This system will work. You do this thing plus reach out as well. Don't just close yourself in. Right. Reaching out is one of the most important things. Right. Don't fight a lonely fight, right? Don't fight. No, Build your support system. Talk to somebody. them. Talk to us. We have a helpline. You can call us and Right. Hope and Humanity. You can really Right. talk. Right. I see a warrior in you guys. You know, my today should inspire my tomorrow. Right. And from that 200 meters से आपने चंडीगढ़ से केरला का ट्रिप गाड़ी में किया. मैंने आपका इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी देखा था, रील देखा था, जहाँ पे आपने न्यू ड्राइवर्स लाइसेंस का एक स्टोरी डाला था. That was a big achievement. राइट. एंड उसमें आपने लिखा था नॉर्मल इज गुड. Normal is good. Normal is good. And tell me about that. वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज आपका ट्रैवलिंग में you were always into traveling. उसमें आपने स्टोरी मेंशन किया. If you wanna talk about that, कि आप बाइक पे जब आपको पहला लाइसेंस मिला था एज 18. सो वो ड्राइविंग की जर्नी अभी कैसे कनेक्ट होती है इन लिफ्टिंग यू इन योर लाइफ? So finally you are asking happy question. I had a passion for drive since forever. My father used to take me on drive and bikes. ये सब पापा ने बाइक चलाना सिखाया था. I learned driving bike very early in 6th class. जैसे ही मेरे पाँव पहुँचे थे पापा की, तब से चलाना शुरू किया? तब से चलाता था. चोरी ना? सामने तो नहीं सीखते, तो सब चोरी पीछे से ही है ना? नहीं पापा ने खुद सिखाया. खुद सिखाया? पापा ने मैंने चोरी सीखा था. घर पे स्कूटर खड़ा होता था, तो जब देखा कि अब पापा नहीं है तो चाबी कहाँ है, और सीख लिया. अरे वाह. हाँ, बस सीख लिया. सेल्फ टॉक. क्योंकि आगे जब वो चलाते थे तो आगे बैठ जाते थे ना देखने के लिए कि कैसे चला रहे हैं, गियर कैसे होता है, पूछते रहते थे अच्छा इससे क्या होता है. तो बस एक दिन एक्सपेरिमेंट हो गया, सीख लिया. पर चोरी. हाँ, सॉरी आपको. नहीं. हाँ, मैं बहुत छोटा था, 4th क्लास में था. तब भी पापा मेरे को बाइक चलवाते थे. हैंडल पकड़ता था, स्पीड देता था और क्लच दबाता था. अब मुझे पापा ने ये सिखाया था हाउ टू सेंस कि कब गियर चेंज होना है. Okay. वो स्पीड से, वो वाइब्रेशन से. हाँ, वो सब आ गया था. तो इट वाज जस्ट बायोलॉजी चाहिए थी कि मेरी टांगे पहुंच जाए वहाँ तक. I know how to do it. I know how to do it. So the day my legs were able to be there, touch the ground, I used to drive the bike. तो ये मेरा कनेक्शन है ड्राइविंग से, Right. ट्रैवलिंग से. Right. तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज. मतलब व्हेन आई ड्राइव आई एम लाइक ऑन क्लाउड 9. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. Beautiful. आई एम कंटेंटेड, आई एम कंप्लीट. Beautiful. तो वही छीन लिया मुझसे ज़िंदगी ने मेरी. जो
एक चीज़ एक एक सब कुछ ही छीन लिया था, और वो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्यारी थी वो भी छीन ली. तो जब वो दोबारा मिली, And there was a spark. then there was a spark. Then, भाई, that was coming back home. तो वहाँ से ड्राइव का आइडिया आया. तो मैंने आपको अभी बताया था कि वो ड्राइव तो ये खुद को साबित करने के लिए थी कि दैट आई हैव अराइव्ड, मैं आ गया हूँ, नाउ आई एग्जिस्ट. Right. पर अब है वो जो ड्राइव करते करते ना, मैं जो इस बंदे ने स्टार्ट किया था वो बंदा पहुंचा ही नहीं कभी. वो बंदा तो रास्ते में ही चेंज हो गया था. Mm-hmm. हम इतने लोगों से मिले, हमने इतनी स्टोरीज सुनी, इतना पेन है, इतना मिसफॉर्चून है. हम ऐसे ऐसे लोगों से मिले. एक कपल था जिनकी लाइफ टाइम सेविंग 35 लाख दे स्पेंट ऑन रॉन्ग डायग्नोसिस, एंड डॉक्टर्स भी चलाए जा रहे हैं कि हाँ चलो आज ये कर लेते हैं, कल वो कर लेते हैं. अब बंदा इससे ज़्यादा क्या करेगा. एक लड़की से मिले थे, उसको 24 घंटे फीवर लगता था. शी इज़ ऑलवेज फीवरिश, बट थर्मामीटर से टच करोगे तो कुछ नहीं आएगा. बट उसके ऐसा स्पाइन में लीजन है कि उसकी बॉडी का थर्मोस्टेट ख़राब हो चुका है. तो शी इज़ ऑलवेज ऑन दिस बर्निंग सेंसेशन, ऑलवेज. नॉट ईजी. जब तक पहुँचे देखा, कई मेरे दोस्त, एक दोस्त था मेरा विनय बंसल, डॉक्टर विनय बंसल, वो उसकी डेथ हो गई क्योंकि उसके फादर ने उसको व्हील चेयर दिलाने से मना कर दिया. सी, यू अंडरस्टैंड व्हाट प्रिजन इज. प्रिजन इज 4 walls where you are not allowed to move out. आजकल तो ह्यूमेन हो गए हैं, पर जब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन था तो एक होता था कारागार, अभी भी होता है, जिसमें आपको यू आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द सेल. दैट इज़ द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट व्हेन यू आर फिजिकली ट्रैप्ड. Now understand, disability is like that prison only. You cannot move out on your own. That's prison. What else it is? और वो इतना एक्सट्रीम पनिशमेंट इसलिए देते थे कि बंदा उनके कमांड में आ जाए, उनकी बात सुने. अब हमें इतनी एक्सट्रीम पनिशमेंट मिलती है, हम किसकी बात सुने? तो हम लोगों की बात सुनते हैं. जो भी लोग कहते हैं हम मान लेते हैं. वी डू नॉट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑफ आवर ओन, वी डू नॉट हैव पर्सनैलिटी ऑफ आवर ओन, क्योंकि आप हमें इतने पनिश कर रहे हैं ज़िंदगी की, हम सब्जुगेट हो चुके हैं. मेरे दोस्त को उसके फादर ने पहले तो वॉकर दिलाने से मना कर दिया, फिर जब हालत और ख़राब हुई तो व्हीलचेयर दिलाने से मना कर दिया कि सोसाइटी क्या कहेगी. तो प्रिजन पे, एक्सट्रीम प्रिजन, एंड ही डाइड. ही डाइड एट द एज ऑफ 32. ही डाइड. Crazy. एक दोस्त था, उसको तो लाइफ ने ऐसा सताया कि वो बहुत ही ज़्यादा, उसको खाना भी ठीक से खाने को नहीं होता था. ही कमिटेड सुसाइड. उसकी वाइफ अकेले रह गई, 2 बेटियां हैं, क्या नहीं. एक बार एक को फ़ोन किया था मैंने, वो भी, उसको भी MS था, एंड ही सेड कि भाई आप, मेरे हाथ में ना ब्लेड है, ये मैं सोचा था मैं लास्ट कॉल ही उठाने वाला हूँ, अगर आपकी कॉल नहीं आती तो मैं अभी ये काट लेता. उस दिन बच गया. हमने बात करी, हम काफ़ी, उस बात को हो गए 2 साल, बट समहाउ 2 साल बाद ही कमिटेड सुसाइड. इतना पेन है अब है कि जब मैं गया था तो मैं ये प्रूव करने गया था अपने आप को दैट आई हैव अराइव्ड. फिर जब वहाँ पहुँचा तो मुझे लगा अराइव कर गए हो तो कुछ काम भी कर लो. सो आई केम बैक विद दिस pledge in my mind and heart that now let's serve the society back. Then we have actually incepted this idea कि हमें कैसे काम करेंगे. ये NGO हमने रजिस्टर करा है, पर हम इस पर 1 साल से काम कर रहे हैं. हम पूरा इसका ब्लूप्रिंट बनाया है कि कैसे कैसे एस्पेक्ट्स हैं, किन किन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, किस किस चीज़ों पे हम नहीं छू सकते. फॉर एग्जांपल, हम गवर्नमेंट को इतना नहीं कह सकते कि आप करिए, पर हम गवर्नमेंट को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि देखिए इतने लोग हैं, अब कुछ करिए. Right. अभी गवर्नमेंट के पास डेटा ही नहीं है कि 16% ऑफ द कंट्री इज़ डिसेबल्ड. अभी कल ही मुझे एक मित्र बता रही थी कि 1 करोड़ ही UDID का रजिस्ट्रेशन है. वेयर आर द लेस्ट 15 करोड़. 1 करोड़ के लिए तो गवर्नमेंट बॉदर ही नहीं करेगी. 1 करोड़ के 21 करोड़ होने चाहिए. सिर्फ 1 ही करोड़ का UDID है, डिसेबिलिटी कार्ड इट इज़. तो हमारा काम ये है, हमने ये लक्ष्य लिया है कि हम UDID रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, गवर्नमेंट तक सही डेटा पहुँचेगा, देन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंगली. इनको बाहर लेके आएंगे, इनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करेंगे.
हम आप नॉर्मल लोगों से अर्ज करेंगे हाथ जोड़ के कि हमें भी इंसान समझिए. हम वही हैं जो आपके साथ कभी कंधे से कंधा मिला के खड़े होते थे. हम वही हैं जिसने कभी आप गले लगे थे. आज हम इसमें बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम वो नहीं हैं. We are the same people. We in different circumstances. That's it. We have a heart. We have emotions. We feel pain. We laugh. We have fun. तो हम बस लोगों को यही बताना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं. हमको हेल्प की ज़रूरत है. हमारी हेल्प करिए. हमको इंसान समझिए. और देखते हैं हम कितना चेंज करके लेके आ पाएंगे. एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही दूंगा कि जब तक हम लोग इस दुनिया से जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन के पास कुछ तो होगा स्टार्ट करने के लिए. एटलीस्ट दे डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. लेट्स सी हम कितना अचीव कर पाते हैं. Beautiful, man. That's very powerful and very beautiful. जो जर्नी आप बता रहे हैं, कैन वी कॉल इट अ पिलग्रिमेज और गया कोई और इंसान और आया कोई और, कुछ भी कह लीजिए. जैसे कहते ना कि कहीं मानसरोवर में नहाने से बंदे बदल जाते हैं, वैसे ही हुआ. रिचा, आपके लिए भी जर्नी वैसी थी? चंडीगढ़ से केरला का जो ट्रैवल था, how was it for you? It was really an eye opener, and it was that person who gave his car to drive to him for 200 meters, who insisted that, brought that shift, right? And sometimes people are just one miracle away from their lives to live fully. Wow. And wow, beautifully said. But for that miracle, if we would have been sitting in our home, that would not have happened. Yes. You need to come out. Yes. Right? Because not everyone. They say that the first step is the last step. Yeah. Right? Actually. Take that first step. Everybody deserves that miracle. Yeah. हर एक की लाइफ में होना चाहिए. होगा. Nobody is at fault for things that happen to them. Yes. Right? Mm-hmm. What's the fault of the acid attack survivors? Right. What's the fault of people Right. who were blinded? Or what's the Right. fault of people who had this neurological disease at a later stage? Nobody's at fault. Right. Right? Why are they being punished for it? They have, and big role becomes for the caregivers, right? Right. That their role becomes of paramount importance. Yes. That you have to be supportive, you have to love them fully, and you have to let them be, right? And take care of yourself as well. Yes, take care of yourself. आपने उस दिन बोला था ड्राइवर्स लाइसेंस लेते हुए, you got up from the chair, right? And you said it's a new beginning. So your present is inspiring. Whatever you are doing, the fight you are fighting is inspiring a lot of people, including me, a lot of people like us, to get up from our chairs. Whatever shackle is there, to break that. Yeah. And wake up, get up, fight that fight, and live. Do more, be more. So thank you so much for that. That's really, really, really powerful. And one thought experiment which I want to do with both of you. Imagine this world is ending, right? And we are vanishing like that. Abhi, if you have to utter last few words to each other, what would that be? I love you. See you on the other side. Beautiful. What would you say? I love you so, so, so much. And I'm really grateful that we ended up together. And I had a very wonderful and fulfilling life, and I couldn't have asked for more. Wow. Now I want to go to other side. Thanks so much. Because it's not easy to share and open up. So really, it was very courageous and very bold of you to share, and for your time as well. Really appreciate it. Thank you so much, Abhay. Nice talking to you. Likewise. Yes. And Thank You have very Thanks so much. intelligent questions. Actually, You have that keen eye of depth. It was not something wishy-washy. And you have an air about you that a person can open up. So you have that non-judgmental thing about you, and that's great, I think. Thank you so very much. You are one of the best interviewer I had. You both
Thank you so much. Thank you. बाहर तुमको बोल रहा था ना कि यार इसके क्वेश्चंस ना बहुत ही डीप पेनिट्रेटिंग है. He is pretty devil advocate.